Welcome back. In this module, we'll get to know about the page object model. Page object model is a kind of a best practice जिसको follow किया जाता है in order to write or create the project in the Cypress. If you can see on my screen, so page object model is a design pattern जो कि हम use करते हैं which help us to differentiate या separate करता है हमारे पेज ऑब्जेक्ट्स को एंड देन आर ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स को. पेज ऑब्जेक्ट से मुराद ये है कि हाउ डू वी वांट टू एक्सेस डिफरेंट एलिमेंट इन वन पेज एंड देन हाउ डू वी राइट द टेस्ट केसेस. सो वी नीड टू कीप दीज टू थिंग्स सेपरेट in order for a clean code and you can say in order to prevent the redundant code. So we need to follow this page object model for this. So if you can see on my screen there, let's consider that we have a login page and then we have a registration page और एक उसमें we have book flight page. So यहाँ पे जो login का page है that contain all the web element that are used for the login functionality. And similarly जो registration का page है it contain all the web elements and obviously the methods that deal with the registration. और जो book flight का है that contain the web element and the functionality to book a flight. On the other hand अगर हम बात करें the test cases की, so we have three test cases, TC1, TC2 and TC3. अब जो test case 1 है that is the login test case. अब test case 2 है that is login and registration test case. Actually if we अगर हम register करेंगे and then login करेंगे तो ये पूरा टेस्ट केस कंप्लीट होगा, इसका ये मतलब है. सिमिलरली अगर हम तीसरी टेस्ट केस की बात करें तो दैट इज़ मेनली अ फ्लाइट बुकिंग टेस्ट केस. बट एक फ़्लाइट बुकिंग करने के लिए वी नीड अ रजिस्टर्ड यूज़र ए एंड बी वी नीड अ रजिस्टर्ड यूज़र दैट इज़ लॉग्ड इन टू द सिस्टम. वही यूज़र जो होगा वो दे विल बी एबल टू बुक द फ्लाइट. सो इन दिस पिक्चर वी कैन से अगर विदाउट फॉलोइंग पेज ऑब्जेक्ट मॉडल हम यूज़ करें तो इसमें क्या होगा कि द लॉगिन मेथड या जो आपका लॉगिन का टेस्ट केस होगा वी हैव टू एक्चुअली रिपीट इट अगेन एंड अगेन बिकॉज वी नीड इट फॉर द रेस्ट ऑफ टू टेस्ट केसेस. एंड सिमिलरली जो रजिस्ट्रेशन का है उससे हमें रजिस्ट्रेशन प्लस इन द TC3 विच इज़ द फ्लाइट बुकिंग मॉड्यूल उसमें हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी. सो दिस इज़ एक्चुअली शोइंग कि हमें रेपिटेटिव कोड लिखना पड़ सकता है इफ़ वी आर नॉट फॉलोइंग अ पेज ऑब्जेक्ट मॉडल. सो व्हेन वी फॉलो द पेज ऑब्जेक्ट मॉडल इट सेज कि वी हैव टू डिफाइन पेज क्लासेस. और पेज क्लासेस में हम लोग क्या करते हैं वी ट्राई टू एक्सेस ऑल द एलिमेंट इन दैट पेज एंड देन वी राइट द टेस्ट केसेस. इन द टेस्ट केसेस हम कोड लिखते हैं टेस्ट केसेस का और हम लोग जो पेज क्लासेस बनाई होती हैं वो हम इन टेस्ट केसेस में यूज़ कर लेते हैं. सो इट गिव अस a very neat and clean code A and also we prevent the redundancy of the code. So let's try to do this practically. Okay जी, to implement the page object model सबसे पहले in the Cypress folder I am going to create another folder and I am going to call it as pages. Okay, ये जो pages का folder है this would actually contain all of the pages. फॉर एग्ज़ाम्पल लॉगिन पेज है हमारे पास या कोई भी, हम इसके अंदर वी विल राइट द फंक्शंस के जो चीज़ें हमने परफॉर्म करनी है. तो फॉर एग्ज़ाम्पल इन द लॉगिन लेट मी क्रिएट अ न्यू फाइल एंड आई एम गोइंग टू कॉल इट एज लॉगिन पेज डॉट login dot that is called JS. Okay, so this class and let me call it as export class and call it as login. These are why I wrote export because I want to export this class and I want to use it in the other classes. चलें जी, ये हमारी क्लास बन गई है. अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल पहला जो मेरा मेथड है दैट इज़ नेविगेट.
So in the navigate, I would say cy dot visit, not Cypress, it's cy dot visit, and I am going to copy a URL. Just give me a second. So this time we are going to admin-demo copy. Okay, so I want to access this site. So this is a demo application, and secondly the next thing I want to do is कि मैं इस पेज के ऊपर, if I can show you quickly this page, so there would be username and password on this page. So I want to enter the value in these two fields. So this is admin at your store and this is password. So the next thing I'm going to do is कि मैं इन text box के अंदर values enter करूँ या credentials के credential enter करूँ. So I'm going to call the function enter credentials. So this is name of function. So it would return me cy dot get, and obviously okay, let us check, inspect this element. So this is the values here, and then type is email, and we have id equal to email. So we can access this element using the id selector. So if I can go back onto my code screen, so I would say element and then access through its id, which is email, and I'm going to return this from this method. Let me call this as return email rather. मैं इसी को copy करता हूँ quickly and I will paste it here, and let me call this as enter password. So in this I would use another id. I think it would be password. Let me confirm this quickly from so yes, yeah, we have this id as the password, so we should be able to. And then the third thing I'm going to do is that I'm going to click on this button. So इसका भी id check कर लेते हैं या कोई selector जिसके थ्रू हम इसे select करेंगे. So this is submit type, and I think we can find it as well. So I would call it as submit method, और इसको हम लोग find करते हैं return cy dot get, I would say type equals to submit. So this completes our class. So this class, this is an exportable class. I'm going to remove this one from here. So इस class में क्या होगा कि अच्छा मैं इसे भी close कर देता हूँ. We'll run Cypress again. Okay, so in this class we have this class is exportable, which means I can use it in other classes. So this navigate method would help me to navigate to this URL. I would enter email, password and submit using this. So अब quickly हम लोग अपनी इस class को import करते हैं, और अब I'm going to create a test class. So page object model ये कहता है कि we need to create the pages separately and then we need to create the test separately. अब page हमने create कर लिया है. अब next is to create the test. हम यहाँ पे E2E folder में आते हैं जहाँ पे हमारे दूसरे test पड़े हुए हैं, and I would simply click this and say login dot cy dot js.
सो ये मेरा टेस्ट बन गया है। अब इस टेस्ट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू इम्पोर्ट, क्या इम्पोर्ट करना है हमें, वी नीड टू इम्पोर्ट दिस क्लास। तो इसको हमें द सिंटैक्स इज लॉगिन फ्रॉम pages.login which is okay, yeah, this is what we need। अब आगे चलते हैं हम लोग एंड what we need to do is इस क्लास को अब हमने यूज़ करना है। सो आई विल क्रिएट द टेस्ट से इट एंड आई एम गोइंग टू रिमूव टेस्ट एंड लेट मी कॉल इट एज login with valid credentials। ये टेस्ट का नाम हो गया एंड देन फंक्शन और अब हम लेट मी क्रिएट अ वेरिएबल कांस्टेंट लॉगिन। ये वेरिएबल बना रहा हूँ मैं, एक्चुअली दिस इज़ क्लास वेरिएबल और यू कैन कॉल इट एज अ ऑब्जेक्ट। सो एंड दिस इज़ फॉर लॉगिन क्लास। And now I'm going to use this object to access different methods of this class. So I will say login dot navigate okay, यहाँ तक try करते हैं if our code is running fine or not। I would write the cpx npx Cypress open। okay, so we have imported the login page class जो कि we have created in this यहाँ पे जो हमने create किया है in the login। इसको अब हमने यहाँ पे in our test class import किया है and we have ये इसका object बनाया है and then we have actually invoke the first method which is the navigate। अच्छा, अगर मैं यहाँ तक इस कोड को सेव करके रन करूँ तो नाउ अगर मैं इस navigate के मेथड की डेफिनेशन दिखाऊँ आपको तो it would take us to this website। ठीक है, चलिए मैं इसको सेव करता हूँ, let us see if it works। so ये test 1 की बॉडी में आया है and it is able to land on this which is good। अभी वी विल कॉल इट्स अदर मेथड्स जो हमारे पास रिटर्न ईमेल के हैं और एंटर ईमेल का है, एंटर पासवर्ड एंड देन सबमिट। तो इन सबको कॉल करते हैं और फिर आई वुड से लॉगिन सॉरी एलपी लॉगिन पेज डॉट आई वुड से एंटर ईमेल विच इज़ मेथड और मैं करूँगा डॉट क्लियर सो दैट अगर कोई इसमें ईमेल ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो वो क्लियर हो जाए। एंड देन आई वुड से एलपी डॉट एंटर ईमेल अगेन दिस फंक्शन एंड डॉट टाइप एंड आई वुड टाइप द ईमेल सॉरी email in this which is admin@yourstore.com and same thing I would do for the password। lp dot enter password dot clear and then lp dot enter पासवर्ड एंड डॉट अब हम अपना इसमें पासवर्ड एंटर करेंगे विच इज़ एडमिन। okay, so now we are able to add we are able to navigate and then हमने इस मेथड से अब इसको फाइंड आउट किया ईमेल की कंट्रोल को और वहाँ पे हमने टाइप कर दिया, देन पासवर्ड कंट्रोल को फाइंड आउट किया और वहाँ पे टाइप कर दिया। सो अभी सबमिट पे क्लिक करना है बट लेट अस फर्स्ट रन दिस एंड सी इफ देयर इज़ एनी इशू हियर। सो नो इशू, we are able to type into the
अब हमारे पास जो लास्ट स्टेप है दैट इज़ वी नीड टू क्लिक ऑन दिस बटन. सो अब मैं आई वुड से lp डॉट सबमिट, और इसमें हमने फाइंड आउट किया था, लेट मी चेक. सो इसमें हमने ये सबमिट का बटन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टाइप फाइंड आउट किया और इसे क्लिक कर दिया है. सो सबमिट डॉट क्लिक ऑब्वियसली, एंड दैट इज़ इट. अच्छा, अब इसमें हमने ये फाइंड आउट करना है, अगर हम अपने टेस्ट केस को दोबारा ओपन करें, वी आल्सो नीड टू चेक. सो वी ओके, इसमें हमने ये फाइंड आउट करना है कि जो URL है आफ्टर द लॉगिन वो क्या होता है. सो इट शुड कंटेन, इट शुड बी दिस URL. लेट मी कॉपी दैट URL. लेट मी ओपन दैट साइट. Okay, so this is the site and if I log in, so ये URL हमें मिलता है या नहीं मिलता. अगर ये URL मिलता है तो इट मीन कि वी आर लैंडेड ऑन द डैशबोर्ड. सो क्विकली ये एक इसमें असर्शन भी हम लोग ऐड कर लेते हैं. सो आई वुड से CY अगेन, हमने पहले भी ये असर्शन यूज़ की थी, CI.URL एंड डॉट, ये हमारी इम्प्लिसिट असर्शन है शुड वाली, शुड, एंड आई से बी डॉट इक्वल, और यहाँ पे मैं ये URL पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने कॉपी किया है. ओह माय बैड, आई हैवंट कॉपीड द URL. जस्ट क्विकली इस URL को करते हैं कॉपी एंड लेट्स पेस्ट इट हियर. ओके, आई हैव कॉपीड द URL हेयर. चलें जी, अब हमारा कोड कंप्लीट हो गया है. लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड. सो इट इज़ रनिंग द टेस्ट नाउ. ओके, वी गॉट एन एरर. लेट अस सी क्या एरर है. फ्रॉम Cypress, आई थिंक वी डू नॉट नीड दिस वन बिकॉज ये I typed it wrong. It should be CY dot. Okay, let me save this now and run it. Okay, it's running fine and it's checking for the assertion. Okay, assertion is false because somehow किसी भी वजह से login was unsuccessful. Please see the error. यहाँ पे जो credentials paste हुए, I think there is an error in this. Okay, submit के बटन पे I think it wasn't able to click. So let us run this code again. lp dot submit and click. मैं इसको सेव करता हूँ and try to run it again. Okay, let me find out अगर ये login बटन find out नहीं कर पा रहा. So okay, मैं इसको कॉपी करता हूँ and let me paste this instead of that. So let's check अगर ये अभी रन होता है. Okay, there should be any other error. Maybe this site is not allowing an automated tool to run. However, you can see that the main motive of this lecture was to understand the page object model. So we created the page where we created function that were actually related to this page, the login page, which is here in this case. Let me show that real quick. So if I log out, so we wanted to check if the login work or not. So this is the login page. यहाँ पे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल ये कहता है कि हमें इस पेज से रिलेटेड जितनी चीज़ें हमें नीड टू ऐड इन द पेज, और जो टेस्ट वाली चीज़ें हैं, व्हाट वी वांट टू टेस्ट असर्शन और वी वांट टू पास द डेटा, वो हमने अपने टेस्ट के पेज में करनी है. सो आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू. विल सी अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर.